Am I audible? Please check. Yes, sir. Yes, sir. Earlier Yes, there was some sir. technical issues. Okay, audio was not clear or not listen properly, I think. Okay, so let's start. In the previous class, what we discussed, can anyone tell? Have you appeared that all of you appeared that previous uh, or the last quiz and surprise test? Yes, All sir. appeared? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Some of you score some good marks also, and the same is already updated in your CMS. Okay, you Yes, can sir. find it from your CMS how much you scored. The mark is updated. Okay, Yes, sir. okay. Most of you score at least 5 to 10 students scored 10 out of 10 in surprise test. Okay, and also few of you also scored 8 and 10 in quiz test also. That suggests your performance is quite satisfactory. Still, some of you have to put some extra effort to score as much as possible because if there is nearby the physical classes will not happen. That means you have to appear that online examination. So you are in such a situation that there is a two possibility of mode of conducting your semester examination. Either maybe physical or maybe of online also. Okay, so prepare for both accordingly. पॉसिबिलिटी So किसमें in सबसे the ज्यादा है सर? पॉसिबिलिटी सिचुएशन तो मांग रहा है कि अभी फिजिकल हो सकता है मगर if this will continue for another 1 or 2 months, it is also possibility that online. Actually, we are at the very peak of this Omicron, so expecting that this should be reduced after 15 to 20 days more. If that happens, that college will reopen by February 15th or 20th. Okay, this is the possibility we are thinking. But what will happen, Omicron will decide and its effect. Get it or not? ओके सर. Okay. Who can share that how was the question in the previous quiz and surprise test? What was your view? Whether it is standard or easy or it is difficult? Who can, any one of you? Swarnila Malik, can you hear me? Swarnila Malik, can you hear me? Okay. Asrivad Mantri is there. How was the question? Quiz and surprise? Easy to moderate. Very good. I think most of the questions are from your class notes. I think, yes or no? Yes, sir. Okay. Okay. So let's discuss today's in today's class. We actually in the earlier class to that test we were discussing about that robotics. Some important parts of robotics. Let I show you that things we will discuss. That robotics class will be continuing. In the previous class we discussed your robot anatomy along with its identify actually your types. Okay, slide is visible. Yes, sir. यस सर. Okay, now it is visible. यस सर. Yes, sir. Okay, so all this what we have discussed in the previous class related to this robot. The definition of robot was over along with your robot anatomy. What are the main parts? Okay, like your robotic arm, your actuator, end effector or gripper, wrist, how much, or what are the orientations that we can place it like pitch, rear, roll motion. Along with also we discussed the robot configuration. Okay, under robot configuration we discussed your Cartesian robot, cylindrical robot, polar robot,
Your another one is last one is articulated robot. Okay. So all these things we have discussed theoretically, but let's see how it looks and what are the robot anatomy. We come to the construction part, each part how it looks. This through this class we able to understand. Okay. So as defined, a robot is a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move materials, parts. This was the definition earlier or not? Okay. Tools, specialized device through variable programmed motion for the performance of a variety of tasks. And this is given by Robot Institute of America. Okay. Are you able to hear me or not? Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So this was the definition we have discussed. So still I show you because okay, you have to remember this one. Okay, so that was the manipulator. Manipulator is a types of robot. If you can, robot is also called as your manipulator. You can see how it looks. Okay, able to see it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this way you can this type of device. Have you ever seen anywhere? No, sir. Yes, sir. Okay, so that No. means your robot manipulator looks like this. This is one is your legged robot, another one is your wheeled robot. Wheeled robot means actually, as we discussed, that the base of the robot is fixed, yes or no? Its base is movable. So if we attach the wheel to move, it is called your wheeled robot. And if it is moved with help of certain some legs, or 2 to 3 or 4 legs, if we attach, it is called your legged robot. Are you able to identify it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Diagram, the diagram, what if it looks smaller to you? Please zoom it. You can have a clear picture on it. So that legged robot, that means the leg is provided along with what are the other components we will also see and how it looks we see. Okay, so this actually intentionally I put these slides here to visualize that how it looks actually. Okay, wheeled robot, clear. Can I move to the next slide? Okay, sir. Autonomous underwater vehicle. ओके जो नावल नेविगेशन के लिए जो यूज होता है नावल सिस्टम में जैसे हमारा नावल शिप है उसी तरह रोबोट भी उधर जो यूज हो रहा है it is looks like autonomous underwater vehicle and also unmanned aerial vehicle is there. Okay, under types of robot. So what is the uses of that robot? Basically, as we discussed, that means here jobs that are dangerous for human. Okay, that means the job which looks very dangerous for human. There we can place a robot to work it easily. Okay. So cleaning the circulating pop of a nuclear power plant. So as you know that in nuclear power plant, how much um, uh, how it is a cleaning purpose also in nuclear power plant. So this is one of the use. Are you able to see it or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay, sir. move to the next slide. You can see that repetitive jobs that are boring, stressful, or labor intensive for human. That means suppose as discussed, suppose if I tell you that you just but stand in the stand somewhere and your work is work suppose you have joined in any organization, your work is to only stand in front of something and work. What is your work? To just pick one thing and place that one. Pick one, place one. So if this type of job you are assigned, so what you will think? That means after certain times you will feel that this work is very boring. I will not do this job. Okay, tendency is that the same as you think also. So that type of job which are boring, stressful, and repetitive work. Same work actually no one likes to do the same work. Okay, so there we can place a robot also. So first one was that in a nuclear plant, power plant for the cleaning. Here the jobs which are your boring, stressful, repetitive in nature, there we can also place a robot. Okay.
So here this robot is just doing the sentence. Okay. Okay, sir. Welding is a permanent or temporary change? Permanent. Have you ever seen that welding application anywhere? Yes, sir. You give Yes, one sir. example. So in Dukan or sir, I have seen in Discovery Channel in manufacturing some cars. Oh, what you have seen? I have seen everything in TV or in Android with help of Sir, Android everything. sir, sir, But have sir, you also seen in practically? and making That of is day-to-day life examples. What you have seen has a more impact than what you have seen in the TV. Okay, you have to shown TV in Tesla's the electric vehicle. Have you seen? You have already seen electric vehicle in TV, but yes, how sir. it looks, what is the extra things here in addition to that existing IC engines or internal combustion engines, what is added there? That is quite interesting. Okay, so all you listen here, questions will come to each individual one by one. So those who will not respond, I will not give them the attendance. Okay, because Okay, sir. most of you joined the class but not responding throughout this call. This is very poor. Okay, move to the next slide. This is called the Sublimate Robot. This type of robot can be used there that human do not want to do. Okay, so suppose this is one example what I have shown here, that this is the tax actually no one prefers to do. Yes or no? Yes, Actually, sir. this is Yes, sir. Yes, sir. there also we can place the robot, but for our own uses we can do such type of work. But for the public places we can't. So there we can place a robot to do such type of work. So these are the manual tasks that human do not want to do. So till now what we have discussed, robot can be used to such works which are repetitive, which are boring, which are stressful, and which that human do not want to do. Yes or no? And along with that, cleaning to next slide. Move to the next slide. This is the laws of robotics as given by Asimov already discussed. So no need to see this slide. So this is the first industrial robot. Name is Unimate. Please try to remember. Question may come in your semester examination. Name the first industrial robot. Name is Unimate. Okay. The first reprogrammable robot who coins the term universal automation. Okay. He later shortens this to Unimation. Actually, that Unimate. Actually, robot is a device which works automatically. There is no only that instruction from that human is given, but it works automatically. Hence, initially it was called as your universal automation, or that is your Unimation, which becomes the name of the first robot company in 1962. Okay, so this was the first industrial robot. Name is Unimate. Move to the next one. This is called Puma, Puma, Puma 560 Manipulator. This Puma is a programmable universal machine for assembly. PUMA stands for Programmable Universal Machine for Assembly. Yani this type of robot is used for assembly purpose. Suppose there are 5 parts in a suppose any machine part consists of 5 components. So its work is to just assembly all these parts. Get it or not? Yes, sir. Yes, sir. So, Puma, suppose someone to tell you that what is Puma,
Puma means your programmable universal machine for assembly. Okay. So Puma 560 manipulator developed by Unimation. This you can see. That means we are just proceeding from 1954 to till now. Okay. So how that what type of robots are available? So the robot did growth in 1980. Okay. So many institutions introduced program and courses in robotics. Robotics courses are spread across mechanical engineering. That means if you are course. So first one is Adapt's SCARA robot. Second one is Cognex Insight robot. And third one is Barrett Technology Manipulator. Okay. So these are the robots that actually that the growth of robot industry actually occurred in 1980. So now you can see this is the emerging application of robots in the field of space. Okay, you can see emerging applications in 1995 to till present. Applying small robotics and mobile robots drive a second growth of startup companies and research. Here, this robot is showing the diagram showing here. Here, what is the diagram shown here? You can see this is the 2003 NASA's Mars exploration rovers for that search of water on. This is the NASA's Mars exploration rovers. Okay, so it looks. You get it or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So till now, what you have learned, that means what is a robot, what are its configuration, and what type of robots are used in which field. Now come to the knowledge of robotics. Okay. So as you know that the last line you just mentioned, right? Here the concept of mathematics, physics, mechanical, electrical, computer engineering is used here. Okay. As it consists of your main parts like sensors and signal conditioning, actuators, power electronics, hardware and component interfacing. It is required for a software engineer or the computer engineering. For that programming, we need computer engineer. For sensor and signal conditioning, okay, we require both mechanical and electrical engineer. And the dynamic system modeling, we require also mechanical engineer. So in addition, if you take an overview, that means your robotics is a interdisciplinary subject. So all these are the key components of robot, your sensor, actuator, okay, user interface, manipulator, linkage, base, okay, how these are interconnected, you can see. Move to the next one. That robot base, what we have learned, it is fixed or movable. We already, through that diagrammatical representation, we have already seen this one. And now you can also see again, it is a legged robot or wheeled robot. Similarly, here you can see why this legged and fixed robot are where it is used and where it is required that you should install a movable robot. Okay, that means its base is movable. Okay, so robotic manipulators used in manufacturing industry are examples of fixed robots. They cannot move their base away from the work being done. So what is the fixed robot? Fixed base is indicator, that means it will not move. Okay. So basically this type of robots are preferred in manufacturing industry. Am I audible? Yes, Am sir. I audible or Yes, not? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So movable base or mobile base are typically platform में use किया जाता है in platforms with wheels or tracks attached. Okay. Instead of wheels or tracks, some robots employ legs in order to move about. Okay. Also, if they use leg, it is called leg robot. If they use wheel for that movement purpose, it's a wheeled robot. Okay. Okay. Also, track robot we can also tell. Move to the next slide.
This is the mechanical elements used in robot. So those are the mechanical engineering. They have more to learn. These are what is gear. Here different types of gears are here. Helical, spore gear. Okay, ये सब जो gears है जो आगे बढ़ेंगे. So this is your sensor which is used in robot also. Okay. As like a human, I already told you that robot looks like a human. So like a human hand, robot is having arm. तो जैसे रोबोट का जो ह्यूमन का 5 सेंस organ है, जैसे आपका आई, ईयर, ये सब ऐसा है, तो रोबोट का भी उसी तरीके का है सब. ठीक. So robot is having also the same. So as human senses sight, light. Oh, this is wrongly written as sight. It is, I think, sight. Sight means it is distance vision. You can call sound, total information to function and survive. Similarly, robot also uses sensor. So that means if we compare with human, it is almost identical. Okay, because we found that the arm joint to joint, there is wrist. We are having also wrist. Okay, same way. So robot sensors measure robot configuration, okay, condition and its environment, and send such information to robot control. Okay, that means robot sensors work is to measure robot configuration or condition, its environment, okay, and such information or to robot controller. That means this information, so what it collects, that sensor, what information to robot controller. In the previous class, in the robot anatomy, we found one part is the controller. Yes. So all these information they send to robot controller as electronic signal. Okay. And robots often need that information that is beyond 5 human sense. Okay. That means suppose you are telling that human having 5 senses, so robot using more than that. Okay. Part picking. Robot can handle work pieces that are randomly piled by using 3D vision sensor. Since alignment operation is special part of feeder and an alignment pallet are not required, an automatic system can be constructed at low cost. Vision purpose for side vision. Okay. So this is called vision sensor. This is called force sensor. Okay. Force sensor. Parts fitting, robots can do precise fitting. आप जैसे वर्कशॉप था इस बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स था और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, तो यानी कि यू आर नॉट acquainted with that machine fitting parts. Okay, parts fitting. आप जब फिट कर रहे हो, there is a chance of there is some gaps like that fitting may not be perfect. Okay, but robot can do precise fitting. Okay, and insertion of machine parts using force sensor. Okay, so all these part fittings are done by force sensor. Okay, a robot can insert parts that have the phases after matching their phases in addition to simply inserting them. Please mute your audio. So my audio is disturbing. Please mute it. It can automate high skill job. Then this is called your proximity sensor. Okay. So what is that proximity sensor? We can tell. What is proximity sensor? Distance measurement sensor. प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या है आपको मालूम है? नो. प्रोक्सिमिटी सेंसर ये होता है कि आप अगर जैसे देखो कोई गाड़ी मूव कर रहा है, ठीक है, आप जैसे मूव कर रहे हो, आपके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा या नहीं, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा. समझे? सो ये प्रोक्सिमिटी सेंसर इज एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. समझे या नहीं? यस सर. यानी कि इट विल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट. गेट इट? यस सर.
समझ नहीं आया सर। What is your name? Roll number 21. Please tell your name. सर गुप्तेश्वर आचार्य। Okay. You are not able to understand what is proximity sensor. 21 गुप्तेश्वर आचार्य। Proximity sensor, you tell me it is a contact type sensor or non-contact type sensor? यस सर। अरे yes sir क्या बोल रहे हो? Contactless sensor, sir. हाँ, contactless है, non-contact sensor. Contacting नहीं, non-contact और contactless, समझे? यस सर। सो ये क्या करेगा, ये आपको ये डिटेक्ट करके बताएगा कि आप जो रास्ते पे जा रहे हो आगे कुछ ऑब्जेक्ट्स है या नहीं, ऑब्स्टेकल्स है या नहीं, समझे या नहीं? यस सर। अरे रोबोट कहाँ पर, सपोज एक जगह पर कहाँ पर काम, ठीक, उसके आगे अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्टेकल हो गया तो वो क्या काम कर पाएगा? वो अगर तुम सोचोगे कि उसको वो कांटेक्ट करे, यानी कि इट विल डिटेक्ट द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट, गेट इट और नॉट? यस Yes, सर। sir. वो बिना कांटेक्ट करके बताएगा। सपोज हम जा रहे हैं, रास्ते पे चल के जा रहे हैं, हम अपना आंख बंद कर देंगे तो हमको पता चलेगा आगे कुछ है या नहीं। अगर हम हमारा सपोज हमारा आगे का जो आंख है, आंख में हम कुछ नहीं दिख सकते, हमारा आगे अगर कुछ ऐसा सेंसर फिटिंग करेंगे, ठीक है, जो प्रोक्सिमिटी सेंसर, तो बता देगा कि आगे आपका कुछ ऑब्स्टेकल है या नहीं, समझे? तो Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। Okay, so these are the proximity sensors. It looks like you can see that koala robot is having proximity sensors installed in it. So 6 ultrasonic sonar explore wide open areas, obstacle detections over a wide range of 15 centimeter to 3 meter. 1 मीटर कितना फीट होता है? 1 मीटर कितना फीट होता है? अरे, am I audible or not? Yes, 353. कितना? 350. ठीक से बोलो, क्लियर ऑडियो से बोलो। 3 feet. 3.33। हाँ, सो यानी कि वो लिख रहा है कि एक अगर आपका ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, आप ये वाला जो प्रोक्सिमिटी सेंसर है फिक्स करोगे रोबोट में, तो ये आगे आपका 15 सेंटीमीटर से लेके 3 मीटर तक को आगे कोई ऑब्स्टेकल होगा तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा या डिटेक्ट कर लेगा। 3 मीटर मतलब आपका 10 फीट, सोचते हो या नहीं? आप जो रोबोट को मूव करना आप देखे हो या नहीं? No. देखे हैं सर। No, sir. हाँ, अरे आप इसमें आप मोबाइल में भी आप देख सकते हो हाउ दैट इज रोबोट वर्क, स्मॉल रोबोट। हाँ, सो आप उसके आगे अगर ये वाला सेंसर लगाओगे, प्रोक्सिमिटी सेंसर, सो इट विल डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम 10 फीट, ओके। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टिल्ट सेंसर, tilt center, it will show you part is tilted or not through certain angle. Here common robotic actuators, actuator जो पढ़े थे, actuator, okay, it's basically it drives the arm, okay. So suppose देख रहे हो कि suppose एक रोबोट का आर्म मूव कर रहा है, आर्म इधर से उधर जा रहा है, ये ऐसे पेंटिंग कर रहा है वॉल, ठीक है, robot is doing all such type of work or not? Yes, sir. Yes or no? So from where it gets the power, or from where it drive get? So some Yes, sir. actuators are electromechanical devices. Okay, do you know what is motor? Synchronous motor, stepper motor, servo motor, brushless DC servo motor, brushed DC servometer. ये सब सुने हो? बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाया जा रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उनसे पूछ लेना ये सब मोटर में डिफरेंस क्या है, मगर दिस मोटर्स आर यूज टू ड्राइव द रोबोटिक आर्म, hence it is called as actuator. ओके, यानी कि आपका इसका जो रोबोट का आर्म मूवमेंट होने के लिए जहां से उसको फोर्स मिलता है, समझ रहे हो? अरे हम अपना जो हाथ मूवमेंट कर सकते हैं, हम हाथ इधर से, जैसे हम आज आई टोल्ड रोबोट इज वेरी मच क्लोज टू दैट ह्यूमन, हमारा हाथ हम कैसे अपने से मूव करते हैं या नहीं? सो हमको Yes, sir. एनर्जी किधर से मिलता है? हमारा अंदर से मिलता है, हमारे जो खाना पीना खाते हैं उससे जो एनर्जी क्रिएट होता है उसी से हमको मिलता है, इसीलिए हम मूव कर पाते हैं। मगर रोबोट में क्या, तो तुम कुछ खाना खिलाते हो उसको, कुछ खिलाते नहीं, तो वो कैसे मूव करेगा अपना हाथ? वो उसके लिए कुछ मोटर्स। एनर्जी चाहिए। So these motors helps to drive its arms or limbs. So these motors are called as the actuator. समझे रे? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, और भी कौन सा टाइप का मोटर यूज हो सकता है? आप शायद आगे पीछे पिछले आप क्लास में जो पढ़े थे, अभी आप सब चीज देख रहे हो, आपको क्लियर पिक्चर आ रहा है या नहीं, समझ रहे हो या नहीं? आ रहा सर क्लियर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Clear आ रहा है। स्टेपर मोटर देखो कैसे दिख रहा है। आप नेट में भी अगर सर्च करोगे हाउ दैट स्टेपर मोटर रूल्स, व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाई वी शुड यूज स्टेपर मोटर, आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो स्टेपर मोटर कैसे दिखता है, सर्वो मोटर, डीसी मोटर, तो आप तो लगभग ये सारे मोटर सब जो छोटा जो टॉय होगा उसमें भी आपको मिलेगा नहीं? अरे मिला है या नहीं? आप वो कभी देखे हो सर? कुछ अच्छा? देसी मोटर सर मोटर देखे देखे हैं टॉय में। हाँ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर हैव यू सीन और नॉट? एक ही देखे हैं सर, डीसी मोटर। हाइड्रोलिक मोटर देखे हो? नो सर। चलो एक तो देख लिए, और जाके क्या दिक्कत हाइड्रोलिक है? मोटर सर वो आप कभी, हम एक हाइड्रोलिक मोटर आप नहीं देखे हो, बिकॉज इट विल एक्चुअली रन्स विद हेल्प ऑफ फ्लूइड फोर्स। ओके, आपका न्यूमेटिक सिलेंडर जो है, कंप्रेस्ड एयर हम पढ़ाए थे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में, जो कंप्रेस होने के बाद जो मूव करता है, आपको एक दिन एक लैब सब जो घुमाए थे सब लैब, उसी में आपको एक जगह पर देखे थे सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग सिलेंडर थ्रू न्यूमेटिक, आपका जो कंप्रेस्ड एयर से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर न्यूमेटिक सिलेंडर, इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर योर ड्राइव पावर। ओके, सो ऑल these are helps to actuate your robotic arm. Okay, move to the next slide, you get certain ideas. Okay, next this is controller. Controller provides necessary intelligence to control the manipulator or robot, process of sensory information and compute the control command for the actuator to carry out the specified task. This is your storage device, have you seen it or not? इसको देखे हो या नहीं? स्टोरेज हार्डवेयर देखे हो या नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इतना टाइम क्या ले रहे हो रेस्पॉन्स करना? रेस्पॉन्ड करो तुरंत, अगले स्लाइड देखेंगे। The storage device, these are memory to store the control program and state the robot system obtained from the sensor. देखो कंप्यूटर हार्डवेयर, this is the hardware and the software part of that robot, how it looks. Computational engine that computes the control command, robo board, robotic controller, basic stamp 2 module. Okay, this is called your interface unit, hardware to interface digital controller with the external world or sensor. कोई जो सेंसर जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो जाता है हार्डवेयर को, वो बीच में रहता है कि इंटरफेस यूनिट। सो ये इंटरफेस यूनिट्स आर लुक्स लाइक दिस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके, come to that application part where it is used. Robots used where? In agriculture field. First one is in agriculture field. Kumar, Yes, sir. can you tell in agriculture field where robot is used? Mm,
सर ये जो क्या जो मशीन होता है नहीं 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 नहीं, वो मशीन नहीं होगा। वो जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। हाँ इंसेक्ट, हाँ वही। देखो आजकल एक आया है, जैसे क्या बोलते हैं, क्वाड कप्टर, देखे हो क्वाड कप्टर, ये जैसे ये क्या है उसका नाम, आप ड्रोन। तो ड्रोन हाँ उसका नाम। ड्रोन। बस वेरी गुड, रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। ड्रोन से अब अभी सब जो खेती में मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में जो सब इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो रहा है, देखे हो? यस सर। यस यस सर। सर। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए तो यूज हो रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल, पेशेंट केयर, सर्जरी में यूज हो रहा है, आज ऑलरेडी डिस्कस, लेबोरेटरीज में यूज हो रहा है। ओके, सो लॉ एनफोर्समेंट, सर्विलेंस, पेट्रोलिंग, ओके, वहाँ पर भी अभी आजकल यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, मिलिट्री में आपका डी माइनिंग, सर्विलेंस, अटैक, आपका जो बॉम्ब अगर होगा तो उसको डिफ्यूज करने के लिए भी आपका यूज हो रहा है अभी, माइनिंग सर डी में। माइनिंग क्या है सर? माइनिंग मतलब क्या है बताओ, पहले माइनिंग से आपको डी माइनिंग मिलेगा। माइनिंग तो सर वो जो ओट्स है, ओट्स के क्या? ओट्स, ओट्स क्या रे हैं? मिनरल्स उगाई एंड करना है ओट्स सर। सर। सर और अरे आपका वो बेसिकली डी माइनिंग होता है, मतलब आपका ये कि जो रोबोट होता है ये डिजाइन किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग एंड क्लियरिंग लैंड माइन्स। हाँ, लैंड माइन्स जानते हो या नहीं? हाँ सर अरे ये लैंड। यस मिलिट्री सर। पर्पज में यूज होता है। वो तो जैसे कहाँ पर है कि जो एक्सप्लोजन हो गया, ये हो गया, तो उसको वो डिटेक्ट करता है, समझे? यस सर। यानी कि वो डिटेक्ट करेगा एंड क्लियर करेगा लैंड माइन्स को, समझे? समझे या हाँ नहीं? सर। डी माइनिंग उसको बोलते यस हैं। सर। हाँ वो भी रोबोट क्या करेगा, स्पॉट कर देगा किसी जगह पर है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देगा, समझ रहे हो या नहीं? यस सर। हाँ क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो माइनिंग में एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका एयर, ग्राउंड, रेल, स्पेस, हाँ, यूटिलिटी, गैस, वाटर व्हीकल, वेयर हाउस। यहाँ देखो मटेरियल है, आप जो आपका मटेरियल हैंडलिंग में मटेरियल ट्रांसफर, मशीन लोडिंग, अनलोडिंग, स्पॉट वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए यूज हो सकता है, स्प्रे कोटिंग के लिए यूज हो सकता है, असेंबली इंस्ट्रक्शन, असेंबली के लिए भी यूज हुआ था, हम जो पीछे पढ़े थे जो रोबोट का टाइप्स में कौन सा टाइप्स यूज होता है असेंबली के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, ये वाला सब। ये रोबोट्स इन स्पेस देखो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक, नासा स्पेस स्टेशन आपका जो भेज रहा है वो ऑनमैन्ड व्हीकल, मतलब आपका वो रोबोट ही होगा, समझे? समझे या नहीं रे? यस यस सर। सर। हाँ, ये देखो जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका क्या है रे बताओ? महादेश ऐसे से क्वेश्चन का आंसर भी बोल रहे, महादेश। महासागर। द कोल्डेस्ट प्लेस। हाँ वेरी गुड, ये ट्रोव, कोल्डेस्ट। ये जो अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए यूज होता है, समझे? हाजबोट ऑपरेटिंग इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग कंबस्टेबल गैसेस, हाँ वहाँ पर यूज होता है। रोबोट कैन ऑल्सो वर्क इन hazardous एनवायरनमेंट, देख रहे हो या नहीं? यस सर। मेडिकल में आप देख रहे हो कैसे, मेडिकल में रोबोटिक असिस्टेंट फॉर माइक्रो सर्जरी ऑल्सो इट इज यूज्ड। मेडिकल रोबोट देखो, ह्यूमन का हैंड है, रोबोट का हैंड देखो, है या नहीं लगभग? यस सर। हाँ यस सर। सर। कितना एप्लीकेशन देखोगे, देखो रोबोट इन मिलिट्री, देखो रोबोट एट होम, एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। रोबोट डांस करता है। हाँ सब कर सकता है। अभी उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सुन रहे हो उसमें भी आपका आएगा, ऑटोनोमी में आएगा,
हाँ, आपका ह्यूमन बार बार की ये जो इसका स्ट्रक्चर जो ये सब लुक्स लाइक सी ह्यूमन। अभी देखो आपको मिला तो आंसर। यस सर। होंडा ह्यूमनॉइड रोबोट। देखो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हो। स्मार्ट इरिगेशन दिस इज ऑल अबाउट। ये है 4 लेग्ड हेक्सापोड। डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज हो सकता है। वैक्यूम क्लीनर देखो, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो आप इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हैं। आप जो इस पर अभी देखो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। डिस्टिंग्विशर, ऑटोमेटेड फायर एक्सटिंग्विशर जैसे रोबोटिक फायर एक्सटिंग्विश के लिए भी यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ओके। सो लेट्स टेक द अटेंडेंस। सब समझे या नहीं ये चीज? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर सर। समझ यस सर। क्या बताओ? यानी कि ऑनलाइन क्लास होने से आपको ये एक फायदा मिल गया नहीं। ये वाले पिक्चर हम दिखा रहे तो वही स्लाइड लेके दिखाते। सब ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, या सब टाइम घर में हाँ सो सर के जा पढ़ाई रहा कर ये सर पढ़ रहे हैं, आपकी याद आ पढ़ रहे रही हैं। है। साता भी ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई करो रे, पढ़ाई तो अभी की तो टाइम है हमारा पढ़ाई करने का। हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? जितना आपका आपको हम एज याद बढ़ेगा कर रहे तब। हैं। ये तो झूठ बात बोल दे रे। यासवीर यासवीर ना कौन बोला तो? यशवीर यशवीर ने पाल बोला बोला सर। ना। ओ हमको तो तुम वीर। हाँ हाँ यशवीर वो ने तो हम, वो एक ही स्टूडेंट है जो, हाँ ये एक ही स्टूडेंट है वो, जैसे कि ऐसे इसी तरह का वो बोल सकता है। हम भी एंजॉय किए थे तुम जब थे फिजिकल क्लास में तुम्हारा तो। चलो यस सर। सब लाइन में रहो, अटेंडेंस देने के बाद जाओगे। वो पता नहीं चल रहा है, बहुत लेट हो जा रहे हो। अभी रोबोट आना तो नहीं है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, समझ रहे हो। और 2 क्लास 3 क्लास फास्ट है। हाँ बताओ मुंडोल, प्रेजेंट सर। टुपो, हसन, सोरेन। प्रेजेंट प्रेजेंट सर। सर। यस सर। अरुण सोरेन है। अभिनंदन दास, प्रेजेंट सर। दीपक बेहरा है रे। नहीं, आदर्श, आदित्य,